dear children, welcome back to the knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 4. This is the cover page of your book, English Grammar plus Skills Unleashed workbook. Let's begin a new chapter in this book and it is chapter 12 and the name of the chapter is Degrees of Comparison. So, in the previous chapter we have learned about different kinds of adjective. Let's learn about how can we compare these adjectives. What all degrees are there for comparing these types of adjectives. So here we can see many pictures are in front of us. First picture is of a small house, then a bigger house and much bigger house. So एक छोटा घर है, उससे बड़ा और फिर उससे बड़े घर की बात हो रही है. तीन तरीकों के घर की यहाँ पे बात हो रही है. So, in the first one it is written, Ritu has a big house. Aman's house is bigger than Ritu's house. Jatin's house is the biggest. So, here we can see there are three houses given in front of us and we are telling one thing about each. So, first is the house of Ritu, वो एक बड़ा घर है. Then we are talking about another house. That is Aman's house. Aman का घर है जो कि रितु के हाउस से भी बड़ा है. And the third house is of Jatin, which is the biggest. Means इन तीनों घरों में अगर आप compare करेंगे तो so you are going to tell me that this is the biggest. सबसे बड़ा घर ये है. So that's why we have used here biggest word. So in these sentences, big, bigger, and biggest tells the quality of the house. These are degrees of comparison. So, the degrees of comparison are divided into three parts. The first one is written here and that is the positive degree. When we describe the quality of a noun without comparing it, we use the positive degree of comparison. So, when we talk about positive degree of comparison, here in this, we do no comparison. इसमें कोई भी comparison नहीं होता है. Simple sex sentence हमें मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है Ritu has a big house. इसमें किसी के घर को किसी के घर से compare नहीं किया जा रहा है. Simple sentence हमें बताया जा रहा है Ritu के पास एक घर है जो कि बड़ा है. Next comes the comparative degree. When we compare a particular quality of two nouns, we use the comparative degree of adjective. So, जब हम दो के बीच में कंपेयर करते हैं then we use this comparative degree, जिसमें हमने अमन के घर को रितु के घर से कंपेयर किया कि अमन और रितु दो बच्चों का घर की बात हो रही है. So, अमन का घर जो है रितु के घर से बिगर है. So, this is a comparative degree of comparison. Next comes the superlative degree. When we compare the quality of more than two, सब दो से ज्यादा के बीच में कंपेयर होता है. वो कितने भी ज्यादा नंबर हो सकते हैं. तो जब उनके बीच में कंपेयर होता है then we use the superlative degree of comparison. Now in the third example we compared the house of Jatin. Jatin के घर को हमने तीनों बच्चों के घर से कंपेयर किया और हमने क्या पाया कि Jatin का घर जो था उन सब बच्चों में से सबसे बड़ा था. तो हमने biggest word use किया. Now we have to remember with the comparative degree we often use the word than. So, जब भी हम comparative degree means जब हम दो के बीच में comparison करते हैं तो हम than word use करते हैं. And with the superlative degree we often use the word the. So, लेकिन जब हम superlative degree की बात करते हैं, जब हम third degree की बात करते हैं तो हम the word को use करते हैं. Read some more examples. Deepa runs fast. Deepa तेज दौड़ती है. इससे क्या किसी बच्चे से compare हो रहा है दीपा का? No. So, this is a positive degree. Next, second one is Renu runs faster than Deepa. अब रेनू एक दूसरी गर्ल आ गई जो दीपा से भी तेज दौड़ती है. So we are comparing Renu and Deepa. So रेनू जो है दीपा से fastest है, इसलिए हमने fastest के साथ देखिए यहाँ पे ध्यान लगाया है. Kiran runs the fastest of the three girls. तो तीन गर्ल्स की बात हो रही है, उसमें किरण एक थर्ड गर्ल आ गई जो कि दीपा और रेनू से भी तेज रन करती है. So हमने यहाँ पे फास्ट का फास्टर बनाया था कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में हमने EST लगा दिया. एंड इन द सुपरलेटिव डिग्री अगेन वी आर यूजिंग द हियर. द का यूज किया है.
Now children, here is the exercise given. Let's see. Read the following sentences and mention whether they are in positive, comparative or superlative degree. So we have to read this. हमें नहीं पढ़ना और बताना है कि इसमें से कौन से वाली डिग्री ऑफ कंपैरिजन की यहाँ पे बात है. मीना इज अ यंग गर्ल. मैंने आपको सेंटेंस बताया मीना एक यंग गर्ल है. तो आपने बोला मैम इसमें तो सिर्फ मीना के अलावा किसी की बात नहीं हो रही है. सो दिस इज अ पॉजिटिव डिग्री. नेक्स्ट इज चेतक इज अ ब्रिलियंट हॉर्स. यहाँ चेतक की बात हो रही है और किसी की भी बात हो रही है क्या? नो. सो अगेन here we are using the positive degree. Next, this hill is higher than that one. ये वाला हिल उस वाले हिल से हायर है, ऊंचा. और than भी लगाया है हमने, तो कौन सी डिग्री है? Yes, this is comparative degree. This is comparative degree. Your house is the most beautiful one in your neighborhood. पूरे neighborhood आस पड़ोस में जितने भी घर है उस सब में से तुम्हारा जो घर है that is the most beautiful, सबसे सुंदर है. So here we are using the. So the हम कब यूज करते हैं? In superlative degree. This notebook is cheaper than that one. अब यहाँ पे again we are using than और than हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में. और यहाँ पे दो नोटबुक के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. सो अगेन दिस इज कंपैरेटिव डिग्री. एंड द सिक्स्थ वन इज शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल. सो यहाँ द का भी यूज हो रहा है और सारी जितनी भी गर्ल्स है वहां पे उन सब में उस लड़की को कंपेयर किया जा रहा है कि उन सब गर्ल्स में से वो लड़की जो है शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट. So here we are using the superlative degree. So this was exercise, children. Copy the answers and try to do more exercises like this. Now, formation of comparative and superlative degree. How can we form the comparative and the superlative degree? Let's see. Usually we add ER to make the comparative and EST to make the superlative degree of object. So positive degree जो होती है हमारी उसमें हम या तो ER लगाते हैं comparative में convert करने के लिए या EST लगाते हैं superlative में convert करने के लिए. So here we can see black is our positive degree and in this we have added ER. ER लगा दिया so ये बन गया blacker which is comparative degree और EST लगा दिया तो बन गया superlative degree. Fair, fairer, fairest, clever, cleverer, cleverest. So these are the three degrees. Now when there is a silent E at the end of the positive form. So positive form के last में एक silent सा अगर E लिखा हुआ है पहले से, so we are just going to add. We remove it and add ER or EST to form comparative or superlative degree. So पहले से E लिखा हुआ है, so इस E को हटा देना है और हमें सिर्फ ER और EST लगा देना. So nice में से मैंने E हटाया तो NIC and then ER nicer बन गया and in the superlative degree it becomes nicest. Late becomes later and latest. Okay. At the end of a positive degree, अगर positive degree के last में y आ रहा है, so y को हम change करेंगे और बना देंगे I, and then we are going to add ER और EST. So pretty की spelling में y है, y को हटाया और हमने I insert किया उसकी जगह पे और ER लगाया तो pretty becomes prettier and then prettiest. Lazy becomes lazier or laziest. If the adjective is a small one with less stress on the vowel. So अगर adjective छोटा सा है और vowel का पे stress कम दे रहे हैं, we double the last consonant to add ER. So हम यहाँ देखेंगे adjective छोटे छोटे से हैं, so हम इन्हें उनका जो last word है उसको 2 बार लिख देंगे and then add ER या EST.
So hot एक छोटा word है, तो T को हम 2 बार लिख देंगे, and then we are going to add ER or EST. So hot becomes hotter than hottest, wet become wetter and wettest. So these are the degrees of comparison, children. For other double syllable words that not end with Y, ER or OW or LE. So कुछ words ऐसे हैं जो इससे खत्म नहीं होते, ये जो वर्ड्स लिखे हैं ये उन वर्ड्स के लास्ट में नहीं आते हैं. एंड फॉर एडजेक्टिव विथ मोर देन 2 syllables, और ऐसे एडजेक्टिव जिसमें एक से ज्यादा सिलेबल है, एक से ज्यादा सिलेबल, यू नो, जब हम किसी भी वर्ड को बोलते हैं तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करके बोलते हैं. सो दैट इज कॉल्ड सिलेबल. तो जिस एडजेक्टिव में 2 syllable है, जैसे मैंने हॉट बोला तो एक बार बोला, बट अगर मैंने बोला केयरफुल तो मैंने केयर पहले बोला फिर फुल बोला, इसका मतलब इसमें 2 syllable है. So when we are talking about 2 syllable, we use more and most for the comparative degree. So जिसमें 2 syllable use होते हैं, difficult, careful, handsome, interesting. So यहाँ पे क्या है, 2 syllable का यूज किया गया. 2 बार में हम इन वर्ड्स को बोलते हैं, एक बार में डिफिकल्ट नहीं बोल देते. difficult, careful, handsome, interesting. So ये जिसमें भी 2 syllable है उसमें हम क्या करते हैं, more या फिर most लगा देते हैं उनसे पहले. So difficult becomes more difficult or most difficult, careful becomes more careful or most careful, handsome becomes more handsome and most handsome, and so on. Some adjectives do not follow any of this spelling rule. कुछ ऐसे adjective है जिसमें कोई भी spelling का rule follow नहीं होता. So they are given here. Let's read them. Good, better, best. Bad, worse. Worst, little, less, least. Many, more, most. Much, more, most. Old, elder, eldest. Old, older, oldest. Well, better, best. Ill, worse, worse. So positive degree में ये कहेंगे, जब हम कंपेयर करेंगे तो ये लिखेंगे, एंड जब हम इसको 2 से ज्यादा के बीच में कंपेयर करेंगे तो हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे. Now let's quickly come to the exercise given, children. Complete the following sentences with the correct degree of adjective. So here the blue dresses dash than word use है, इसका मतलब comparative degree यूज करनी है. beautiful 2 syllable वाला word है beauty, then full. So here we are going to use more beautiful, more beautiful. Next, Mount Everest is the, अब यहाँ the use हुआ है, so we are going to write highest, क्योंकि पूरे जितने भी माउंटेन पीक्स है सब में से माउंट एवरेस्ट को कंपेयर करेंगे. जनवरी इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर. अब यहाँ पे अगेन द यूज किया गया है, सो वी आर गोइंग टू राइट ओल्डेस्ट, EST लगेगा. नेक्स्ट, इंडियन सोल्जर्स आर द डैश इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है और द लिखा हुआ है, तो ब्रेव का बन जाएगा ब्रेवेस्ट. Indian soldiers are the bravest in the world. Krishna is dash then Saksham. यहाँ पे 2 बच्चों के बीच में बात हो रही है. Then smart becomes smarter. He is dash then I am. 2 लोगों के बीच में बात हो रही है. Tall है then taller. Here लगेगा. Mangoes are dash then banana. अब यहाँ then है, means 2 के बीच में बात हो रही है. Costly बन जाएगा costlier. अब यहाँ देखिए costly की स्पेलिंग में y है तो y हट के I लग जाएगा. So the spelling will be COSTLIER, costlier. Next, she is the dash girl in the class. The लिखा है, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री लगानी है. इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट 2 से ज्यादा सिलेबल है, so we are going to use most. Superlative degree most intelligent. So this is our answer, children.
Write it down quickly. Next, fill in the missing degrees of comparison. Here the table is given. We have to fill in the missing words. Safe, safer, safest. Useful, most useful is written. So here it will come more useful. Next is bad, worse, worst. Pretty, prettier, IER. Because we are removing y को हटा दिया हमने. So IER, prettiest. Lazy, lazier, laziest. Good, better, best. Much, more, most. Bright, brighter, brightest. And the next one is little, less, least. Wet, wetter, wettest. Next is dash, dash, latest. Latest is written here. So we are going to write late. Next, later and latest. Better is written here. So we are going to write good, better and then best. So these were the children exercise to be done. Next exercise. Here we have to fill in the blanks with the given adjectives. Ravi is dead than Atul. So better than Atul because there is comparative degree here. My grandfather is a dash in the family. Superlative degree is the oldest. Suman is dash than Kiran. दो बच्चों के बारे में बात होगी. Then more beautiful. Your child is यहाँ पे कोई comparison नहीं हो. So we are going to write wet. Sheena is the dash girl in the class. पूरी class की बात हो रही है. Then superlative degree is cleverest. You have solved a dash question. अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन की बात हो रही है. एक क्वेश्चन की बात हो रही है. कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है कि कैसा क्वेश्चन है. So we are going to write difficult question. Aruna is dash than Poonam. दो बच्चों की बात हो रही है. Then shorter. Deepa is the dash girl. So यहाँ पे the लिखा हुआ है. यहाँ superlative की बात हो रही है. Then Deepa is the most beautiful girl. So these are the answers, children. So children, this was all for today in this chapter. In the degrees of comparison, we have done many exercises. We have done many examples here. I want you to learn all the comparative or superlative forms that we have done here so that it will be helpful for you in comparing two or more nouns with each other. So this was all for today in this chapter. In this video, I'll be waiting for you in the next video. Till then, stay late.